Hello students, this is Chandana and I welcome you to the Business Studies class. In our last video, we have started the first chapter of Business Studies, that is nature and significance of management. And in the last video, we have also discussed about what is management and its 5 functions. The 5 functions that we discussed were planning, organizing, staffing, directing and controlling. और हम आज की वीडियो में डेफिनेशन पढ़ेंगे मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है. नाउ द डेफिनेशन इज मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achievement of organizational objective effectively and efficiently. Now, what does this definition mean? Management is a process. Management क्या है? एक process है. जहाँ पे भी word process आता है मतलब कहीं ना कहीं steps involved है. And वो कौन से steps हैं? ये वो वही steps हैं जो हम last video में पढ़ चुके हैं. Those 5 steps. एंड स्टेप्स कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. सो इट इज अ प्रोसेस. क्यों बोलते हैं प्रोसेस? क्योंकि मैनेजमेंट में हम ये 5 स्टेप्स यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? जिससे हमारा काम पूरा हो जाए. फॉर गेटिंग थिंग्स डन. एंड काम क्यों पूरा हो जाए? काम क्यों करना है? विद द एम ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. जिससे जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव बनाया है वो हमारा पूरा हो जाए. अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव बनाया है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, इसलिए तो हम क्या करते हैं? हम मैनेजमेंट करते हैं जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए. अब बात आती है कि ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा हो. ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा हो? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. नाउ दीज 2 वर्ड्स इफ यू सी इन इंग्लिश डिक्शनरी दे आर एक्चुअली सिनोनिम. सिनोनिम मतलब एक जैसे हैं, दोनों का मतलब एक जैसे ही होता है. बट इन बिजनेस स्टडीज it has different meaning. दोनों का meaning different है. Effectively is what? Achievement of goal on time. जो भी काम दिया गया है वो टाइम पे पूरा करना is effectiveness या effectively. Efficiently is what? Using right amount of resources. अगर आप गोल पूरा करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हैं, जितनी कॉस्ट बनती है उतनी ही कॉस्ट लगा रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर एफिशिएंट, यू आर वर्किंग एफिशिएंटली. आप काम कैसे कर रहे हैं? आप काम एफिशिएंटली कर रहे हैं. आई जस्ट रिपीट वंस अगेन. अगर आप अपने गोल को टाइम पे अचीव कर रहे हैं तो मतलब आप इफेक्टिवली काम कर रहे हैं. और अगर आप गोल को अचीव करने के लिए राइट रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट रिसोर्सेज मीन्स सही कॉस्ट यूटिलाइज कर रहे हैं, जितना खर्चा लगना चाहिए उतना ही लगा रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर वर्किंग एफिशिएंटली. आई फील यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. इफ यू हैवंट अंडरस्टूड, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. एंड लेट मी टेल यू, these 2 words are very important for your case studies. इससे case study भी आती है. Now the example is in a shirt manufacturing company. In a shirt manufacturing company, the production manager has given two workers. एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें एक प्रोडक्शन मैनेजर ने 2 वर्कर्स को, वर्कर ए एंड वर्कर बी को टारगेट दिया.
टारगेट क्या था? टारगेट ये था कि ए को बनाने हैं 1000 शर्ट्स पर मंथ और बी को भी कितने बनाने हैं? सेम 1000 शर्ट्स पर मंथ। तो उन्हें क्या टारगेट मिला दोनों को कि उन्हें एक मंथ में 1000 शर्ट्स बनाने हैं। उन्होंने एक गाइडलाइंस और दी। गाइडलाइंस ये थी कि एक शर्ट कितने की बननी चाहिए? एट ₹150। वन शर्ट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड एट ₹150। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आना चाहिए? 150 पर शर्ट। नाउ they have started working, manufacturing start कर दी। At the end of month जब ए की परफॉर्मेंस पता चली तो क्या पता चली कि ए ने सपोज 800 शर्ट्स मैन्युफैक्चर किए हैं एंड हर एक शर्ट कितने रुपए की बनाई है? 150 रुपीज की। ओके, जब बी की वर्किंग हमने एनालाइज करी तब देखा गया कि बी ने बनाए हैं 1000 शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर दिए हैं एंड एक शर्ट, वन शर्ट वाज मैन्युफैक्चर्ड एट ₹170। Now if I ask you whether A was effective or efficient or whether B was effective or efficient, तो क्या आंसर होगा आपका? चलो देखते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर ने टारगेट दिया था कि 1000 शर्ट्स बनानी है पर मंथ एट ₹150। ए ने कितना बनाया? 800 शर्ट्स बनाई और कितने रुपीज में? 150 रुपीज में। ए को क्या बोलोगे आप? इफेक्टिव बोलोगे या एफिशिएंट बोलोगे? इफेक्टिव नहीं बोलोगे। ए इज नॉट इफेक्टिव। क्या उसने इफेक्टिवली काम किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि इफेक्टिवली काम करने के लिए क्या करना है? यू हैव टू अचीव योर गोल ऑन टाइम। उसने क्या शर्ट्स बना ली जितनी उसे गोल दिया था, जितना उसे टारगेट दिया था? नहीं, उसे 1000 का टारगेट दिया था बट ही वाज एबल टू मेक जस्ट 800 शर्ट्स। 200 शर्ट्स नहीं बना पाया। तो क्या उसे आप इफेक्टिव बोलोगे? नहीं, ही इज नॉट इफेक्टिव। बट यस, ही वाज एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि जितना खर्चा करना था एक शर्ट पे उसने उतना ही खर्चा किया। एफिशिएंट क्या होता है? यूजिंग राइट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। तो हाँ, एफिशिएंट तो था क्योंकि जितना कॉस्ट उसे खर्चा करना था उसने उतना ही किया। बट यस, ही वाज नॉट इफेक्टिव। व्हाई? बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू अचीव द गोल। टारगेट वाज 1000, बना कितने पाया? जस्ट 800। नाउ we'll see what B has done. B was also given the same target, right? But here B has manufactured 1000 shirts. So yes, we can say that he is effective because जितना उसे बनाने को दिया था, जितना टारगेट दिया था, he was able to manufacture it. And उसने 1 month में पूरा काम कर दिया. So he was able to achieve the goal on time. So we can call him effective. Yes, B was effective. But can you say that he was efficient? No, he was not efficient. Why? बनाना तो था 150 रुपीज में एक शर्ट, but he was able to make it at ₹170। 20 रुपए खर्चा उसने ज्यादा किया। तो उसने रिसोर्सेज क्या सही यूटिलाइज किए? नहीं, उसने ज्यादा यूटिलाइज किए। 150 की जगह he was putting 170 पर शर्ट। 20 रुपए ज्यादा खर्चा किए। So we will say that he was not efficient. So this is
about effectively and efficiently. Now I'll just repeat it once again. What is management? Management is a process. क्यों process बोलते हैं? Because there are 5 steps involved which we use it. ये 5 steps हम use करते हैं. Planning, organizing, staffing, directing, controlling. ये क्यों use करते हैं? For getting the things done. अपने काम को करने के लिए ये steps use करते हैं. And क्यों use करते हैं ये steps? क्यों ये काम करते हैं? Because we have to achieve the organizational objective. और कैसे achieve करना है? Effectively and efficiently. I feel you must have understood. Thank you, class.